inspiration to came with the biopic as such, and what was the challenge to make this project? Sir, as a challenge, if you see, जो 150 आवर जो ऑडियो कंटेंट इनको दिया गया था डायरेक्टर मैडम को, उसको वो 2.5 घंटे में या 2 घंटा 40 मिनट में खींच के करना पड़ता है, वो एक चैलेंज था. अदरवाइज हम जो कर रहे जो लॉजिस्टिक्स, वही बहुत बड़ा चैलेंज है. तो वी नॉट फेस दैट काइंड ऑफ एनी प्रेशर ऑन इट. Nihal sir, you एंड दिस विल बी आवर डेब्यू फिल्म. जो मेरे को अभी आप देख सकते हैं वीआर फिल्म प्रोडक्शंस करके, और कोई कंपनी बना दिया. तो आगे भी हम जो अच्छा स्क्रिप्ट बेस जो मूवीज ऑफर आएंगे, डेफिनेटली वी वुड लव टू make the movies. and Nihal sir, playing a living legend character, I mean, what was the thing you were looking for, and what was the thing you struggled to make this character alive on the screen as such? I lived this character and loved this character. It was not a struggle. I enjoyed doing this character. Reason being, I'm not doing any imaginary character over here. जो मतलब मैं पात्र निभा रहा हूँ, he is a real life hero. जो कुछ भी हुई है, मतलब दिखा रहे हैं हम लोग फिल्म में, that has actually happened. I don't know whether in my life probably we can reach at least 2% or 5% of what Vijay sir has done. But the 2.5 hours on screen, I wanted to relive each and every moment of Vijay sir. That is what I dreamt of. And apart from that, as an actor, yes, as a मतलब तभी बोला था आपको कि हम लोगों ने एक कैरेक्टर मतलब ये डेवलप किया था. व्हाट यू कैन से वी हैड आवर ओन लिमिटेशंस फॉर द कैरेक्टर बिकॉज एवरीवन मतलब नोज विजय सर क्लोजली. ठीक है, तो द मुस्टैच व्हाट यू आर सीइंग, द हेयर स्टाइल से लेके द वेट बढ़ाना, एवरीथिंग वी वांटेड टू बी हूबहू. मतलब जो भी देखेगा स्क्रीन पे, वहाँ पे निहाल नहीं, विजय सर आएंगे स्क्रीन पे. सो दैट इज़ व्हाट वाज माय थिंग. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन इट कम्स टू द other characters, they have supported us a lot. In the screen, whenever you see only one actor is performing, the others won't perform, the whole scene will fall down. So it was a very healthy competition between everyone. That workshop what we did really helped us a lot. In South, हम लोग जब करते हैं, we give lot of prominence for the writing, lot of prominence for the content and the pre-production. Pre-production is like, as you know, you're getting preparation for your examination. Not only for the actors, Rishika made sure, even the cameras, the lighting setup, everything was in place before itself in the pre-production. मतलब हम लोग ऐसे, this would be the camera angles and everything we had planned it. So I hope we have given justice to that. Something from I was being part of this project, and what you to say about the project as such and being part of this from you, sir. So I don't know I can be like Anand sir in real life. That's a question mark. But I got to live his life on screen. And when I got the script, I wanted to meet Anand sir. But he's a very busy person. Out of 365 days, at least 350 days he'll be working. Without, only on Sundays, half day he's going to take break. Only if it is necessary. Otherwise, he'll be working. So it was hard to even meet him. But luckily, thanks to him, that he gave me time to meet him. I got some time to spend with him, observe him, how he talks, how he walks, everything. That really helped me to, represent this character. And also, there were a lot of emotional scenes, lot of problems which they tackled. So I was, asking his experience about all those events. So getting inputs from him helped me a lot. And like Nihal ji, I've told, we had nearly 2 to 3 weeks of workshops. We got to know each other well, and that really reflected on screen. Sir, to add to your question in a small way, like in our real lifetime, 700, 800 times we might have approached the bankers or financiers, but in the movie, because of a time duration, just once or twice we will be able to showcase it. That's right. Ma'am, something you want to tell? You are playing a vital role, and it's a mature role. So what was the... Yes. Yes, the first question that Rishika ma'am asked me when she called me was, you'll be seen in 3 different age shades, the young, middle and the present age. Are you okay doing it?
Coming from a theatre background, I've always been taught that an actor doesn't have any age and you should not bother about this. How long will I be seen on screen or on stage? So getting to play such a role in my lifetime, I think it's truly a blessing. And like you said, yes, it's a matured character because I'll be seen in 3 different age shades, but it is adding so much value, and the story is such that it has to be presented in that manner. I personally decided not to work out or not to, I thought, okay, let me just eat and become a little plumpy, because back then that's how women looked. They were a little chubby, and also Lalita ma'am is a mother of 4 kids, so I was keeping that in mind when I was working. And also about, I already mentioned about the language that we were working, and I was trying to converse a lot with my mother, who is a homemaker, and also I spoke to Lalita ma'am. I got a lot of inputs. More than that, I got to know how their emotions are, which place are they coming from. So that really helped me portray this character. And like I said, I've drawn so much family values by doing this role that I am sure everybody who's part of this film will be a milestone in our career. Like Nihal sir was telling, इसके बाद हम चाहे 100 फिल्में कर ले, लेकिन this film will always remain special. Thank you so much. Do we have any other questions? Yeah, we have a few questions. Yeah. हेलो हाय हाय सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितना इंस्पायरिंग कि विजय सर की जर्नी रही है, उतनी इंस्पायरिंग फिल्म नज़र आ रही है हमें स्क्रीन पर. बहुत ही प्रॉमिसिंग है. कॉन्ग्रेचुलेशन. निहाल जी, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आज सिनेमा काफ़ी बदला है, और आप भी वाकिफ़ होंगे कि जो हिंदी फीचर फिल्में हैं उनकी तुलना में आजकल साउथ की जो फिल्में हैं, कन्नड़ा हो मलयालम हो, उसे काफ़ी तवज्जो दी जा रही, काफ़ी वैल्यू दी जा रही है. क्या माइंडसेट इस समय आपका चल रहा है? कि आज काफ़ी कुछ बदला है, लोगों का नज़रिया बदला है फिल्में देखने को लेकर, तो क्या चल रहा है मन में? कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? सर, देयर इज़ नो बिग फिल्म देन शोले. Yeah, we have all grown up watching those films. There is no better romantic actor than Shah Rukh Khan, sir. Okay. See, it's just that our films, now that we are getting a platform, we are getting recognized. तब से लेके अब तक कभी भी there are good films being made in Kannada. The first pan-Indian film from Kannada was Shanti Kranti, done by Ravichandran sir, way back then. And because Ajay First underwater film was done a by Kannada film. was a Kannada film. Vandu Muttina Vandu Kathe. Muttina Kathe. Vandu Muttina Kathe, which was done by Shankar Nag sir, late Directed. Shankar Nag sir. Okay, so there were films which have been done, all thanks to our digital platforms, all thanks to this digital world that, we have got this opportunity. And I would like to thank one person, rocking star Yash sir, because KGF was a cinema which gave us this confidence. KGF was a cinema where he showed us a path that we can go and we can, show our film to the rest of the world. So the path what he has set, we being the juniors to him, I've been a big fan. Every one of you know, Yash sir from KGF, but I've been a fan of him since from his first day. So, whatever each and every cinema, he is, been an inspiration to me and many like me, even including Rakshit Shetty. So Charlie was a beautiful cinema. So I say it's just that, we are all one, sir. There is no woods. It's only Indian cinema, sir. We are just representing the southern part of India, and where basically I am representing the North Karnataka part. Like, in Kantara, if you might have seen, there is a coastal belt of Karnataka. North Karnataka is the majority part of Karnataka where, this is the dialect which we speak. Like, for example, in Tamil, there is Madurai Tamil, which we have used for this cinema. In Telugu, district Telugu. And in Malayalam, it is Northern Malabar Malayalam. Hindi में हम लोगों ने, मतलब हिंदी में मैंने खुद डब किया है अपने वॉइस के लिए. It is Marathi accent mixed Hindi. जो हम लोग अभी बॉम्बे में बोलते हैं, वैसा वाला हिंदी हम लोगों ने ऐड किया है. So we are trying to represent our own culture, our own land. The best part is, people are liking it. They are showering us love. And they're accepting it. That acceptance thing itself, which is giving us that courage to make even more cinema. And this is a golden period, golden era for our Kannada cinema industry. And the best part is, we are all living in the same era. Yeah, and the thing is, we are not here to compete with anybody. I think we are just here to do our best work, put it out there.
And like sir said, we are just happy to be called as Indian cinema right now. And like, see, like when I'm the first thing itself, I said you, sir, ki the first inspiration for me to make a biopic was a film called as Guru, which Abhishek Bachchan sir has done it long way back, right? And there's this film called as Iruvar, again done by Maniratnam sir, Nayagan, Mahanati, MS Dhoni. There are so many films which have been in here, the Sura Reporter, which was done, which was a national award winner last year, Tamil cinema. So as a filmmaker, for Rishika, it's not that, you know, we are showing something which has never been shown. Sir, cinema is there more than 100 years. तो जो कुछ भी हम लोग दिखा रहे हैं वो सब कुछ है, बस हम उसको अपडेट करके we are showing it to you. We are trying to bring the best version out of it. That's it. You know, अगर बात की जाए विजय सर की लाइफ से, क्या कुछ आपने खुद में लाया उनकी जर्नी से, you know, कुछ बातें जो आपने खुद में डाली है? सर 5 दिन जो मतलब सर ने हमको डिक्टेशन दिया था, that 5 days changed my life. You know, इससे पहले मैं काम करता था, मतलब I was like a horse. I'm a horse, you know, who was running on the road, but Vijay sir made me run on the racing track. I hope you got my point. So there is one thing, sir, dedication, ethical business is what I got to know from the way sir has, you know, started the business. And कुछ भी करो, मतलब not everything should not be done for money. Something you have to do it out of your heart, where, you know, like उससे अगर किसी को अच्छा होता है, if something is, you know, if you're trying to do something with which it will help the society and people, go ahead and do it. And इससे पहले मैं काम करता था बस काम करने के लिए, but now I'm doing the work because, you know, that 100% should be given. और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है. So he said me that be punctual to your timings and make sure that, you know, you never make anyone wait, so that, you know, the time will respect you back. The many things I've been learning, I hope I'll take back few. बाकी के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी. बिल्कुल देखेंगे. आनंद सर, यू नो कि एक पिता के लिए, यू नो कि अगर जैसे कि आप एक तोहफे के रूप में ये फिल्म उन्हें डेडिकेट कर रहे हैं, उन्हें दे रहे हैं विजय सर को, क्या रिस्पांस था जब आपने ट्रेलर दिखाया? और ये भी जानना चाहूँगा कि यू नो कि क्या इमोशंस आपके रहे हैं, मतलब अपने डैड के लिए कैसा बॉन्ड रहा है आपका? सर जैसा कि अभी मैं रियलिटी बात करता हूँ, जो आप देखते हैं जब भी कोई एंटरप्रेन्योर या जो बिजनेस शुरू करना चाहता है, कुछ नाम लेके स्टार्ट कर देते हैं. बट ही स्टार्टेड दिस विजयानंद रोड लाइन्स VRL व्हेन आई वाज जस्ट 1 year boy, taking my name into it. And you know that always as a father, and you know that respect always I think Pankaj sir has witnessed you know a couple of times sir had been to Hubli. I request him to just add what he observed from his point. He never expressed, but can tell a few words about it. First of all, we were supposed to release this movie in December, but this was because of the biopic, और ये हकीकत इसमें दोहरानी थी, तो इसके लिए 1, 2, 3 बार शूट हुआ था. और इसके लिए आनंद सर हर बार परेशान होते थे, नहीं ये डैडी बराबर नहीं दिखते, ये वाले डैडी बराबर दिखते हैं मेरे, ये कहानी बराबर नहीं है, ये वाली कहानी बराबर है. तो द आर्टिस्ट एंड द डायरेक्टर्स, ऑफ कोर्स साहब ने भी बताया, डायरेक्टर्स वर ऑल्सो वेरी पर्टिकुलर अबाउट हाउ इट केम आउट, एंड दिस वॉज अ लॉन्ग जर्नी, एंड फाइनली 9th of December इज वॉट इज कमिंग थ्रू. बट जब भी मैं लास्ट टाइम जब बेंगलोर गया था रिलीज़ के टाइम में, अब विजय सर को देखो, सीरियसली काफ़ी लोग मिलते हैं. टुडे वी हैव रिलीज अबाउट 75 मूवीज़ इन द लास्ट 2 years. कोई आर्टिस्ट मर्सिडीज़ में आ रहा है, कोई BMW में आ रहा है. तो लास्ट टाइम हमारे ऑफिस पे भी आने वाले थे, तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी को बोल के रखा था, भैया जरा गाड़ी वाड़ी आवे तो देख लेना. साहब ऊपर आ गए, अच्छा नीचे से तो कोई फ़ोन नहीं आया मेरे को. बाद में आप जाओ सर, एक सिंपल सी इनोवा में बैठ के अकेले एक आदमी के साथ में रेगुलर कपड़े डाल के आगे, इट इज़ नॉट समथिंग कि भाई आई एम समवन, आई नीड टू बी देयर, आई नीड टू बी रिकग्नाइज. मेरे को ये कुछ आजू बाजू में मेरे को पूरा कारवां मेरे को चाहिए, नथिंग. इज सच अ सिंपल मैन, एंड he proudly says that he sees the same qualities in Anand sir, and he sees the same qualities in his grandson also. And when it comes to business, sir, like जो भी decisions you know साथ में बैठ के you know discuss करके, each one has to respect their you know the decision or whatever we discuss. So that kind of a bonding, that's how you know been growing. पंकज सर, लास्ट आपसे
आपने अभी मेंशन किया कि कोई ये खान की फिल्म नहीं है, खान ब्रदर्स की फिल्म नहीं है, कि ना किसी इंडस्ट्री से फिल्म है. क्या आपको लगता है कि कंटेंट होने के बाद भी ऐसे स्टार्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप सिनेमा को समझते हैं? मेरे को इंडस्ट्री से बाहर निकालेंगे क्या? ये ऐसे सब क्वेश्चंस पूछ के. बट नो, देखिए आज जैसे आप पता है अबाउट 70-75 मूवीज जो रिलीज़ की है. द लास्ट वन वाज यशोदा. बिफोर दैट वी डिड रॉकेटरी. बिफोर दैट वी डिड चार्ली, जो निहाल जी ने पता है. सो ऑल द मूवीज दैट वी हैव डन सो फार, दे हैव बीन वेरी वेरी मीनिंगफुल मूवीज. और ये सब मूवीज में आज Samantha was a big name. पुष्पा पे नाम आया, बट इन द नॉर्थ स्टिल Samantha was not that big, and unfortunately through the illness what she was going through. और रॉकेटरी में नंबी सर थे या रक्षित शेट्टी जी जो थे. टुडे पीपल आर एक्सपेक्टिंग द कंटेंट. भैया मेरा टाइम एक्सपेंसिव है, तो मेरे को बता तू क्या बोलने वाला है, आप मेरे को क्या सीख देने वाले हो ये पिक्चर में. इस सीख मतलब ये वही नहीं है कि मेरे को आके लेक्चर झाड़ देना, बहुत मिलते हैं घर पे अपने को. बट मेरे को समथिंग विच आई कैन इम्बाइट इन मी. सो दिस इज समथिंग विच जब भी हम मिले थे, बस इट वॉज जस्ट द VRL एंड इट वॉज जस्ट द बायोपिक दैट वी हैड रेड. वी सेड नो, वी वांट टू डू दिस मूवी एंड वी हैव टू डू दिस. एंड फॉर्चुनेटली दे ऑल्सो एग्री टू इट एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम फॉर दिस. मैं ऐड करना चाहूँगी कि कंटेंट को खान्स की ज़रूरत पड़े ना पड़े, खान्स को ज़रूर कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है. सो आई थिंक इट इज़ द अदर वे अराउंड. ऑलराइट, डू वी हैव एनी मोर क्वेश्चंस और शुड वी हैव लाइक अ क्विक पिक्चर विद द एंटायर टीम? ओके, वी डू हैव वन मोर क्वेश्चन. सेकेंड पेपर चालू किया आई थिंक कनाडा वानी, विजयवानी, जो 8 लाख सर्कुलेशन आई थिंक पर डे, नंबर 1. तो सर BRL अभी प्रोडक्शन चालू किया, क्या इंडिया का नंबर 1 बनेगा प्रोडक्शन में? आप लोगों का प्यार है तो. पूरा सर कहानी बताइए. नहीं, देखिए अगेन मैं बताया, जैसा स्क्रिप्ट बेस आएगा तो हम उसमें पिक एंड चूज करके विल ट्राई टू गिव आवर बेस्ट. मैं सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूँगा. अभी थोड़ी देर पहले निहाल सर ने बताया था कि जब ये बस में कहीं जाते थे तो बोलते थे कि VRL का टिकट लेना, ठीक है. तो ऐसे ही कल को जब आप फिल्म देखने जाएंगे तो VRL की फिल्म देखेंगे. Wow, brilliant. And with that, ladies and gentlemen, thank you so much for your questions. Thank you so much for your time. And दिल से हमें इंतजार है 9th का, जब हम ये मूवी देखेंगे. Yes. December 9th को हमारी फिल्म विजयानंद कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम 5 भाषाओं में December 9th को is releasing worldwide. It's a humble request to all my media friends to please promote the cinema and to please accept the cinema, and I hope you like the way we have presented. We are newcomers. We are trying to show the inspiration. We want this inspiration to be reached out to each and every youngster out there. To please help us out for that.